Free audio post-production by alphonic.com. Hi there, welcome back to Being Your Day. Today's topic is going to be Indian parents, a very sensitive one, but I think it's important to talk about it. So I'm going to do it. I was just watching a video about this another person sharing her thoughts about Indian parenting. And the first disclaimer that she gives is that please don't bash my parents in the comments. And if given a choice to choose my parents again, I'll still choose them no matter how much trauma and the kind of things that they've had to go through because of their parents. But yeah, I think I'm carrying the same feeling with me. I'm not going to talk about the negative aspects as much because they are not here to tell their side. And I am pretty sure that parenting is one of the toughest jobs, if not the top ones, to take up. And I completely respect that. It is like I can't even imagine giving birth to a baby at 23, 24, and trying to navigate your life. You're still a baby yourself, trying to understand the world, and then yeah, getting this whole responsibility of taking care of a child and not wanting things to go wrong for them and just being very protective and how that affects a child. So yeah, I'll share a bit about that, about my personal story, a bit about this episode of Mahabharat that had three questions, very beautiful questions on parenting that I'm going to keep with me and want to share with my parents at some point. And yeah, just something positive to take out of this, some hope and some heart to heart for us children out there. So yeah, specifically for the single female child, I'm the one. So I have been loved a lot, but I have been overprotected as well. So there's that. All right. I think I have spoken about Indian parenting before as well. And I've tried to do it in as much good light as possible in the past. But yeah, I'm gonna try to make an attempt and be as raw as possible. But I also don't want to give off any bad vibes because I genuinely, there's a part of me which will break at the thought of hurting my parents. And I would never want that. I know that they intentionally have never tried to make choices that will affect me negatively. They were learning it themselves. It's their first time understanding how to bring a child, how to help them grow. So I understand they are doing their best. I just want to bring a mirror to that and help every other person who might be in a similar position cope with it better. So, yeah, just trying to focus on what's under our control and how, even in the worst case scenarios, you always have the choice. You always have some agency to your life, and that will always save you. That will be your anchor. So, let's focus more on the parts that we can control and not on what we can't. So, yeah, firstly, I just want to talk about the grateful part of everything. My parents went through a lot as kids and adults, and money was an issue, as most Indian parents. So, they obviously did not want me to go through all of that struggle. And yeah, we lived in a small locality before I was born. And the moment I was 1 or 2 years old, we shifted to a better one. And my dad just wanted to make sure I got access to the best resources and never wanted me to see what poverty looked like. And yeah, I have been blessed in that sense. Not in the kind that तुमने जो बोला वो तुम्हें मिल गया and पैसों की कदर नहीं है. That has never happened. I have never had any pocket money in my life. I've never had ऐसे खर्चे, मतलब that I would ask from my parents
I've never gone out with friends and gone on trips or anything of that sort. Yeah, it was, if you, money was only granted to you for reasons that you had to justify, and you really had to try had to explain ki this is important, this is needed, only then you were given that. बाकी ऐसे ऐश मारने के लिए नहीं मिलते थे पैसे. So yeah, I'm not like a spoiled brat child. uh, in that sense, I've always been very mindful of money and thought about the use of it. वो अलग बात है जब खुद से पैसे कमाते हो तो पहला पहला तो तुम्हें ऐसे रहता है कि आई एम फाइनली अर्निंग, आई वांट टू यूज इट माय वे. तो वैसे किया है मैंने भी, अपने फाइनेंशियल मिस्टेक्स काफी किए है. बट व्हेन इट कम्स टू माय पेरेंट्स मनी, आई हैव नेवर like used it irresponsibly. I can hardly remember, yeah, asking for money at home. I was very happy with everything that was already provided for me, and I did not want to like go over and above and ask for more because my basics were set. और मेरे ऐसे कोई खास मनी रिलेटेड विशेस होती भी नहीं थी. सो दैट्स दैट. एनीवे, so I think the real deal starts when you turn 18 or 20, and that's when you start to see the controlling nature really come into play, because your parents have lived a certain way, which is mostly the conventional way, and that's the kind of path. Since they have walked on that path, they know what mistakes happen. They want you to do that, and तुम्हारा मोस्टली कोई अलग ही तरीका रहता है चीज़ों से डील करने का, बिकॉज़ obviously there's like 20 years of age gap, and with the amount of emerging technology and everything that's happening around you, you obviously don't want to stick to the old ways, and you are going to have your own thoughts. Even if it wasn't for the emerging technology and everything, तुम्हारे खुद के ओपिनियंस होते हैं, तुम्हारे खुद के लाइफ को देखने का तरीका अलग होता है. Now, for example, because my parents were born in lack, they give a lot of importance to money. But because I wasn't born in lack, I have the belief and idea कि money is abundant. It's everywhere. I can get it. It's not that difficult. So I don't have any blocks when it comes to money. And I have very positive beliefs around it. But for my parents, there are many limiting beliefs. They feel you need to struggle for money. It's not easy to have it. You need to compete a lot. And ये सारी चीजें फिर वो पास ऑन होती जा रही है मेरे अंदर. And that I did not realize until I started earning myself, until I opened myself up to the world, and मैंने दूसरों से सीखना शुरू किया, लाइक थैंक्स टू इंटरनेट. वरना आई डोंट नो मैं अपने नए बिलीव्स कहाँ से बनाती, एंड बुक्स. But yeah, I started seeing people who talk about money with a lot of confidence, and they're like, no, you don't have to struggle. You have to find your core, what you're good at, your center, work upon that. Money is an energy, it is spiritual, it is beautiful, it is an exchange of value between people. There is no lack of money. तो वो जब तुम्हारा एक बिलीफ में चेंज आ जाता है, तभी you start to see the changes. But since इतने साल से और अभी तक मुझे गलत तरीके से उसके तरफ इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, and because I have been taught from my parents' perspective and their experience, even though it's not my experience, वो थोपा जा रहा है मेरे ऊपर. And I can differentiate and be like, no, this is not true, because maybe this has worked for me, but I am looking up to people who are not living like that, who have a secure mindset around money and relationships and all of it. So let me have the space to create my own thoughts and opinions. Don't pass it down to me. So I would like to add like the 3 questions jo I hope I remember it well, Mahabharata episode wala. So in this particular episode, what happens is Karna, as we all know, is a great warrior, Kunti's son, who was gifted by, I forgot the name. I'm so sorry. Sun, God. I think you will get it. But yeah, Karna is like a gifted child, of course. But his parents are like, you
you're not the son of a warrior, you're my son, and you'll always have to do like different set of chores, so you can't go ahead and pursue archery and things like that, even though he was great at it. So he eventually gave up that skill, and मतलब उसके बचपन में जब ये सब हो रहा रहता है, he does not want to disappoint his parents, especially his dad, तो वो अपने शस्त्र पानी में बहा देते हैं. So that's when Krishna comes around and he talks about these 3 questions to parents, and he asks कि पेरेंट्स का इंटेंशन अच्छा है, इंटेंशन बुरा नहीं है कि हमें हमारे बच्चे के लिए बेस्ट ही चाहिए, पर तुम्हें ये भी सोचना है कि टाइम के साथ चीज़ें चेंज हो रही है, तो जो तुमने एक्सपीरियंस किया है वो ही तुम्हारा बच्चा एक्सपीरियंस करे, वो ज़रूरी है ही नहीं, क्योंकि टाइम चेंज होते रहेगा और टाइम के साथ नई नई चीज़ें आती रहेगी. सो यू कैंट एक्सपेक्ट तुमने जो गो थ्रू किया है वही तुम्हारा बच्चा भी सेम चीज़ एक्सपीरियंस करे. तो एक तो वो हो गया, ठीक है. दूसरी बात है कि एवरीवन इज डिफरेंट, सबका लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी यूनिक, एंड उनके क्या बोलते हैं, उनका ग्रोथ बहुत अलग होने वाला है. सो व्हाट वर्कड आउट फॉर यू माइट नॉट वर्क आउट फॉर देम, एंड दे आर नॉट गोइंग टू एक्सपीरियंस द सेम, लाइक सिमिलर टू व्हाट आई मेंशन बिफोर. वो सेम चीज़ें एक्सपीरियंस करने ही नहीं वाले, बिकॉज दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट. दे आर वी आर टॉकिंग अबाउट 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ पीपल. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट तुमने तुम्हारा बच्चा हो गया तो वो तुम्हारा क्लोन नहीं बन गया है. इट इज अ डिफरेंट एंटिटी ऑल टुगेदर, बट यू आर ट्राइंग टू मेक दैट पर्सन खुद के जैसा. लाइक एवरी डैड इज कि मुझे अपने बच्चे को अपने जैसा बनाना है, तो मैंने जो पाथ फॉलो किया है उसमें जो भी क्या बोलते हैं उसको अड़चन आई है, आई नो अबाउट इट, आई एम अवेयर ऑफ इट, सो आई डोंट वांट माई किड टू गो थ्रू दैट. बट वॉट इफ योर चाइल्ड इज नॉट इवन चूजिंग दैट पाथ, वो ऐसा पाथ चूज करे जिसके बारे में तुम्हें अवेयरनेस ही नहीं है, एंड यू हैव नॉट वॉकड दैट. फिर तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सी अड़चन है, क्या आने वाला है. तो यू ट्राई टू कंट्रोल देम एंड बी लाइक नो नो नो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, आई हैव नॉट सीन दिस, it looks unsafe, so you can't go there. You have to do something I know, or something that I have been going through or have gone through in the past, ताकि मैं तुम्हें गाइड कर सकूं. बट दे लूज द होल एस्पेक्ट ऑफ मैं एक अलग इंसान हूँ, आप एक अलग इंसान हो, और हम दोनों एक नहीं है, हमारे पाथ्स भी एक नहीं होने वाले हैं. नो मैटर हाउ मच यू वांट, इट्स नॉट गोइंग टू बी द सेम. देन तीसरा क्वेश्चन दैट ही टॉक्स अबाउट इज challenges and failures. Those are the ones that build character. ये चीज़ें होती है जब तुम you'll see your character is shaped in the most lowest moments of your life. जब तुम फेलियर देखते हो, जब तुम्हारे challenges आते, तब तुम सबसे ज़्यादा ग्रो करते हो, तब तुम सबसे ज़्यादा सीखते हो. तो पेरेंट्स क्या करते हैं, वो बच्चा फेल ना हो, उसके साथ कुछ ना हो, तो उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं, ये इसके साथ कुछ बुरा ना हो कुछ, और वो तुम्हारे हाथ में नहीं है. लाइक इट्स नॉट रियली इन योर हैंड्स. नो मैटर हाउ मच यू ट्राई टू प्रोटेक्ट योर चाइल्ड, दे आर गोइंग टू फॉल, दे आर गोइंग टू मेक मिस्टेक्स. तो तुम उस चीज़ को पहली बात कंट्रोल नहीं कर सकते, और कंट्रोल करने भी लग गए, वुडंट योर चाइल्ड बी अ वीक चाइल्ड, बिकॉज दे आर नॉट इवन इक्विप्ड टू handle challenges by themselves. They have been so dependent on you and the idea of life that you wanted them to live and protect them, कि उन्होंने वो challenges face ही नहीं किए. उनको पता ही नहीं failure क्या है, उनको पता ही नहीं कि challenges के थ्रू जाना कैसे, अकेले कैसे डील करना इन चीज़ों को लेके. उनको पता ही नहीं है कि खुद के लिए स्टैंड लेना क्या है, उनको पता ही नहीं है कि वो क्या वैल्यू करते हैं लाइफ में, उनको खुद की आइडेंटिटी ही नहीं पता है. वो तुम्हारे विचार और तुम्हारे प्रिंसिपल्स के हिसाब से चल रहे, उनका खुद का तो कुछ भी नहीं बच गया उसमें. सो एंड आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली चिल्ड्रन टिल द एज ऑफ 15 to 18 हु आर वेरी गलिबल, और उनकी पूरी पर्सनालिटी अपने पेरेंट्स को इम्प्रेस करना ही हो गया है. उनका तभी तक दिमाग नहीं खुद से बना रहता है. इट इज़ आफ्टर अ सर्टन एज यू स्टार्ट टू सी कि अरे ये मैं हूँ ही नहीं. सो या सो कृष्णा आस्क्स कि ऐसे प्रोटेक्शन का क्या मतलब है जब तुम्हारा बच्चा चैलेंजेस और फेलियर से ग्रो ही नहीं कर पा रहा है. सो डोंट यू थिंक यू शुड लेट देम go through it by themselves instead of protecting them, because real character is developed through challenges?
So yeah, and it was just beautiful the way that whole thing. I think the episode is season 2 का कोई तो है episode 10 के आसपास होगा शायद. Please just watch it. It's when Karna is in his बचपन वाला age. That's when Krishna talks about it. And मैंने clearly ज़्यादा अच्छा काम नहीं किया होगा उसको पोर्ट्रे करने में, बट व्हेन यू लिसन टू इट यू विल फील सो हर्ड एंड ऐसे एकदम दिल को छू जाएगा. सो प्लीज डू वॉच दैट एपिसोड. सो या, इट रियली हिट होम एंड आई फेल्ट सो गुड कि ऐसा कुछ बना है जो इस पे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं पेरेंट्स, वेयर दे कैन अंडरस्टैंड द चाइल्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. एंड आई नो parenting is a very difficult task, so please take help from our shastras or please take help from outside. Yeah, parents need to know that they can't always be right. They have to be open to this lifelong learning process of this is something new, something I've not experienced before. So I need to have a learner's attitude to it. I need to keep asking my children if they are comfortable, if they feel seen and heard, if they feel that they have a say in their own life, if they feel like they have the choice to live freely, if they feel like no one's imposing their thoughts on them, if they feel like they have been creating their own identity. ये कॉन्वर्जेशंस होना इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ नॉट इनफ टू प्रोवाइड फॉर योर किड्स फाइनेंशियली. दैट इज़ द लीस्ट समवन कैन डू, बिकॉज वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. यू हैव टेकन दैट चॉइस टू ब्रिंग अ चाइल्ड इन टू योर लाइफ. 18 साल तक इट इज़ काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ देम. But what a bigger responsibility and a bigger task is to shape their character, to understand that. Okay, so even this पार्ट कृष्णा मेंशंस कि तुम्हारे बच्चे के लाइफ में क्या होगा, कैसे होगा, वो सक्सेस पाएंगे कि नहीं, या जो भी तुम द काइंड ऑफ थिंग दैट यू ड्रीम फॉर देम, दैट कैन बी प्रेडिक्टेड. You can't control that. But what you can control is your child's character, is their values. तो जितना हो सके उसका कैरेक्टर बिल्डिंग वाले प्रोसेस में उसका साथ दो, उसको सही वैल्यूज देने की कोशिश करो. एंड दैट विल ओनली हैपन व्हेन द पेरेंट himself or herself does not have limiting beliefs and values. So they need to make sure कि they are constantly learning and getting ahead in terms of building character and building the right values, ताकि वो अपने बच्चों को दे सके. और फिर बच्चों पे छोड़ दो. Be very confident about the values, morals and principles that you've given to your child. अगर उनका फाउंडेशन जो उनके कैरेक्टर्स और वैल्यूज है वो तुमने शेप कर दिए उनके पहले 20 साल में, तो वो कुछ भी करे, कैसी भी दिशा में जाए, कोई भी मतलब स्किल चूज करे या फिर कुछ भी करे अपनी लाइफ से, वो अच्छा ही करेंगे, क्योंकि आपने उनके अंदर अच्छी वैल्यूज डाली, आपने उनको बांध के नहीं रखना है, आपने उसको सही कैरेक्टर बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू you've helped them, you've assisted them, and that's what a child needs. A child does not need step by step path of how to live. They just need to be shown कि कौन से वैल्यूज है और क्या कैरेक्टर है जो उनके अंदर, मतलब क्या क्या चीजें हैं दैट विल डिफाइन देयर लाइफ. बेसिक थिंग्स लाइक बीइंग प्योर हार्टेड, हेल्पिंग अदर्स, बिलीविंग इन योरसेल्फ, बीइंग कॉन्फिडेंट, बेसिक डे टू डे में कैसे रहना है, खुद के साथ कैसे बात करनी है, दूसरों के साथ कैसे बात करनी है, बीइंग ट्रूथफुल. आई थिंक आई एम जस्ट saying the same things again and again. But yeah, I just feel the best thing a parent can do to their child is introducing them to spirituality from a very young age. And by that, I don't mean puja only. Puja, I can only, like the way I was introduced to it, I could not connect to God with like that. I feel puja should come from a place of devotion and from love. But पहले वो love cultivate करना आना चाहिए. For me, my first introduction to God and spirituality was through meditation. That was when I first felt that I am connected to God and oh my God, there's this energy in my body that I can feel that I've never felt before. This is amazing. Now I know what people say when they talk about God. So now when I pray, I can feel a higher energy. But throughout my bachpan,
Nil, nothing. I've never felt it. I just did it because my parents told me to. But spirituality is about connecting to your center every single day through meditation, through reading scriptures, through reflecting on good habits, bad habits, good thoughts, bad thoughts, good actions, bad actions, and constantly choosing between them, knowing how to avoid greed, anger, lust. और क्या होता है? There are like 5 to 6 things I've forgotten. Like, yeah, many things that are like a problem in your growth. And what you need more of. You need more of love. You need more of joy. You need more abundance in your life. You need community. You need respect. You need, yeah, all of these divine qualities. तो उनको पता होना चाहिए कि लाइफ में क्या सही है, क्या नहीं है, किसके बीच में चूज करना है, और कैसे लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स में डिसीजन लेने हैं विच आर फॉर देयर ओन गुड. एंड वो तभी हो पाएगा जब दे हैव अ गुड कनेक्शन विद देमसेल्फ. हमने क्या किया है? एक तो हमने कनेक्शन एस्टैब्लिश ही नहीं किया है खुद के साथ, एंड देन वी पास इट ऑन टू आवर चिल्ड्रन बेस्ड ऑन वॉट एवर द सोसाइटी टेल्स अस. सोसाइटी ने जो बना दिया है एक ऐसा स्केलेटन, वो पास ऑन कर दिया है. बट खुद की आइडेंटिटी कैसे समझेगा इंसान वैसे, अगर तुम सिर्फ बाहर के थॉट्स उनके ऊपर फोर्स कर रहे हो? दैट इज नॉट नेसेसरी एंड रियली नॉट नीडेड. नथिंग गुड इज कमिंग आउट ऑफ इट. एट मैक्स बाहर से अच्छा लग रही है चीजें, बट अंदर से एवरीवन स्ट्रगलिंग. वी वांट कि अंदर से इतना अच्छा काम कर लिया हो खुद पे कि बाहर से चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कितनी भी दिशा से आ जाए, कौन से भी एरिया से आ जाए, वी आर एबल टू move through it gracefully. It does not get to us. We don't go through anxiety and depression and diseases and what not. और वो तब भी हो पाएगा जब हमारा फाउंडेशन अच्छा है, जब हमारा खुद के साथ कनेक्शन अच्छा है, जब हमारा जो सोल है, वो स्पिरिट है, उसके साथ वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट. तो चाहे जीवन में कुछ गलत भी हो रहा होगा या चैलेंजेस भी आ रहे होंगे, वी आर anchored in our center and we are ऐसे very secure in our own selves. तो वो सिखाने की ज़रूरत है, I feel. So, yeah, anyway, that's all that I wanted to share. And hopefully both parents and children can learn something from it. And don't have any hard feelings for your parents. Forgive them because even they are trying to understand, and तुमने भी गलतियां की होगी अपने एंड से, so they've also forgiven you. Just try your best to reconnect with yourself, and I promise you everything will be okay. It will come under control. तुम्हारे कंट्रोल में यही है कि तुम अपने साथ अपना जो रिश्ता है वो कितना अच्छे से निभा रहे हो, and how much depth you share with yourself, and that part of God within you. The more you established in that goodness, everything else will take care of itself. So it's never too late, and your parents are not the reason of whatever you're going through today. You can still choose to get better. You can still choose to connect with your center, with who you are, and no one's stopping you from that. So yeah, focus on that, try doing that, and बाकी जितनी भी problems है will fade away, and that's a promise I can give. So I have a lot of belief in that. तुमने अगर खुद के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप भगवान के साथ, खुद के साथ जो अंदर तुम्हारे अंदर जो भगवान है उनके साथ एस्टेब्लिश कर लिया, तो वो भी तुम्हारा ध्यान रखेंगे, वो तुम्हारे लिए रास्ते खोल देंगे, and life will be beautiful once again. So yeah, that's it from me. If you made it this far, thank you so much for listening, and I'll see you in the next one. Free audio post-production by alphonic.com.